Welcome back to the channel of Chem Pacific. In this video, I'm going to discuss with you about a very important topic, that is spin-orbit coupling from the chapter Coordination Chemistry. This is a very requested video because students inform me that they are actually facing a lot of difficulties in understanding this particular topic. I hope I can make you understand in a very simplified way. Now, before we get started, if you want to explore more and if you're new to our channel, consider subscribing Chem Pacific, and also if you like our video, do press the like button. Now, let's proceed. Now see, spin-orbit coupling कब और कैसे होता है? Basically पहले जो कुछ results आए थे, these results were actually in agreement with the spin only formula, but in certain case some exceptions were found, some deviations were found. These deviations were actually extremely noteworthy. यही deviations को explain किए गए थे spin orbit coupling. इसे एक very simplified way में मैं अगर explain करना चाहती हूँ, basically क्या होता है, जो ground state term होता है, वो ग्राउंड स्टेट टर्म के जो एक्साइटेड स्टेट्स होते हैं, उन दोनों में अगर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, देन दे कपल और दे गेट मिक्स्ड अप. As a result of which, जो ground state term होता है, it acquires some of the orbital contribution, and this is defined as a spin orbit coupling. So I have given in a very beautiful note form. यहाँ पे I have given you that in the ligand field, the terms of the same multiplicity are not perfectly separated according to their different orbital momentum. Some of the higher T terms, जो higher terms होते हैं, and which terms are actually capable of making the orbital contribution, it gets mixed up with the ground state term. And also remember, सबसे important बात है, जो दोनों high excited state और जो ground state होंगे, दोनों ही सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में होना बहुत ही कंपल्सरी है, होना चाहिए. ठीक है. When they get mixed up, then the ground state term क्या करता है, it acquires some of the orbital contribution, which is now defined as a spin orbital contribution. Spin orbital contribution. I hope this is clear to you. Now let us discuss some of the examples. तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे. So यहाँ पे contribution होने के लिए आपके एक ground state होना चाहिए और एक excited state होना चाहिए, right? Let us consider the example of manganese 2+ in the octahedral field. ठीक है. You must be knowing manganese 2+ in the octahedral field is D5 electronic configuration. ठीक है. तो अगर ये high spin octahedral field हो जाता है D5 manganese high spin, so it is going to have, this is your T2G and this is your EG. Okay, so 1 2 3 4 5. Okay, so now यहाँ पे as because मैंने पहले वीडियो में भी इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, do check it out, it will be very beneficial to you. ये यहाँ पे एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है. You have only one arrangement. This is how it is nomenclature होता है. ठीक है. You are having only one arrangement. ठीक है. That is why, and जब भी आपका both the T2G and EG they are symmetrically filled, then it results एक ही arrangement है, इसलिए इसका नाम A है. And when both of them, both T2G and EG are symmetrically filled, then the name turns out to be A1. If they are not symmetrically filled, then it becomes A2. तो यहाँ पे A1 arrangement है. So number of unpaired electron, it is clearly visible. This is equal to 2. Therefore, the spin multiplicity 2s plus 1 will turn out to be 6, right? So इसका हो जाएंगे, ground term will turn out to be 6A1G, since it is centrosymmetric octahedral, so this is 6A1G. This is the ground state. Okay, now the thing is, this is the ground term, this is the ground state term. ठीक है. तो ये ग्राउंड स्टेट टर्म है और इसमें कोई भी हायर टर्म पॉसिबल नहीं है. दैट इज वाई यहाँ पे मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है. सो आई रिपीट, दिस इज योर ग्राउंड टर्म एंड इट गेट्स नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द हायर टर्म्स. क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू ओनली स्पिन ओनली फॉर्मूला. सो इस टाइप ऑफ कंडीशंस में जहाँ पे आपके पास कोई हायर टर्म्स है ही नहीं, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मिक्सिंग ऑफ द ग्राउंड टर्म एंड द हायर टर्म. So यहाँ पे this will correspond to only spin only formula. Now the question arises, so if कौन से examples या condition में आपका ये possible है. So let us take the example of this. यहाँ पे I'm talking about nickel 2+ octahedral complex which is having DH system. So we are talking about the
nickel 2 plus octahedral complex. Okay, so this is your nickel 2 plus in the octahedral field and this is having the D8. ठीक है. अच्छा, so D8 अगर होगा obviously इसका term हो जाएंगे F and it is very much known to you that F gets split into A2, T2 and T1. ठीक है. Now you see, अगर ये splitting हो रहा है, so this is D8, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So you having electronic configuration क्या हो जाता है T2G6 Eg2. So this is your ground state and it is responding to A2G. ठीक है. So here the number of unpaired electron N is equal to 2 and therefore 2s plus 1 the spin multiplicity is going to be 3 and therefore this is 3f and then you have these things. Okay, so this is your ground state. So ground state is having electronic configuration. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? You see the ground state is your point number 1. You having the ground state which is A2G with spin multiplicity 3. This is the ground state. इसका electronic configuration it is clearly visible to you. T2G 6 Eg2. क्लियर. नेक्स्ट अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो जाते हैं देन दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज योर T2G3 एंड दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड एक इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड टू दिस एंड दिस विल रिजल्टिंग एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे T2G में, इट विल गो टू Eg and it will turn out to Eg3. Then the second excited state is 3T1G. Then this is your second excited state and this will result एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे T2G में, it result in T2G4 Eg4. Now the interesting part is यहाँ पे the energy gap between this and this is very less. This is I have given in a beautiful way in a note form. Now let us get back to the note and let us see what I have given for you. See, तो यहाँ पे जो मैंने कहा the F term जो है, this F term it will get splitted into the three state, the ground state A2G and the first excited state. Okay, so this one is your first excited state T2G and this is the second excited state, triplet state. So this is your second excited triplet state and the electronic configurations are this, एक electron excited हो गया, this and last one electron this. ठीक है. Now what happens, these excited states are now, they are actually very important, they are capable, this excited state, both these excited states are now they are capable of making orbital contribution and the separation बहुत कम होना चाहिए between the excited state and the ground state. So you see यहाँ पे जो separation दिया है between this first excited state and the ground state ये बहुत ही ज़्यादा कम है. So as a result of which it is so these terms they come close to each other and they partly mix and they make orbital contribution. Let me recapitulate. आपके पास तीन स्टेट है, यू हैव द ग्राउंड स्टेट और जो एक्साइटेड स्टेट है, द एक्साइटेड स्टेट मस्ट बी केपेबल ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन. फिर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और जो ग्राउंड स्टेट है दोनों में एनर्जी गैप इतना कम हो जाता है दैट इसमें पार्शियली मिक्सिंग होता है एंड इट देन द ग्राउंड स्टेट एक्वायर्स orbital nature and makes orbital contribution. This is a definition of spin orbit coupling. ठीक है, मतलब कोई भी जो splitted होता है जिसमें higher excited state अवेलेबल है और ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में जब भी एनर्जी कम हो जाता है दोनों मिक्सिंग पार्शियली मिक्स करते हैं एंड दैट रिजल्ट्स इन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग. ठीक है, द स्पिन वैल्यू एक्चुअली तो स्पिन वैल्यू ग्राउंड स्टेट वाज एक्चुअली कंप्लीटली स्पिन वैल्यू हो रहे थे और एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट कर रहे थे, दोनों मिक्स हो गया. ग्राउंड स्टेट जो स्पिन और एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो गया और इसके लिए इसका नाम है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग. ठीक है, सो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. द सिमिलर एग्जांपल आई बी यहाँ पे है.
दिस इज द कोबाल्ट 2 सिस्टम इन द टेट्राहेड्रल फिल्म। टेट्राहेड्रल फिल्म में आप जानते हो कोबाल्ट 2 सिस्टम अगर होगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो कोबाल्ट 2 सिस्टम, अभी तक हम ऑक्टाहेड्रल कर रहे थे, तो दिस इज योर टेट्राहेड्रल, इसके बारे में हम प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल फील्ड अगर है सो कोबाल्ट 2 सिस्टम इज D7, राइट। सो अगर कोबाल्ट 2 सिस्टम D7 है टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे A2 T2 T1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अंडर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 हो जाएगा, ठीक है। सिंस इट इज टेट्राहेड्रल इट इज नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक, यहाँ पे जेरस सब्सट्रेट यूज नहीं करेंगे। एंड डेफिनेटली आपको पता ही है दैट द एनर्जी गैप इन डेल्टा टी इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू डेल्टा जीरो। सो डेल्टा टी इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू डेल्टा जीरो। दिस इज 4/9 ऑफ डेल्टा जीरो, ठीक है। तो ऑलरेडी दोनों में एनर्जी गैप काफी कम है, देयरफॉर यहाँ पे मिक्सिंग तो डेफिनेटली होगा और डेफिनेटली यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आपको जरूर दिखेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस प्रोसीड। नाउ अगर यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है दिस विल रिजल्ट इन दिस फॉर्मूला। पहले आपको स्पिन ओनली करना है और फिर आपको वैल्यूज करना है। तो यहाँ पे जो आपका अल्फा वैल्यू है इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, और आपको कुछ चीज बहुत ध्यान में रखना है। अगर एस स्टेट है तो अल्फा वैल्यू इज कंसिडर्ड टू बी 0, डी स्टेट है इट इज 2 एंड एफ स्टेट हो जाता है 4। वहां पर भी एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर ई टर्म होगा तो इसका अल्फा का वैल्यू हम 2 लेंगे, और अगर ए टर्म होगा A2 टर्म होगा उसका वैल्यू हम 4 लेंगे। A1 तो होता ही नहीं है जो हमने यहाँ पे पढ़ाई किया है, तो मैंने थोड़ा सा ये दो चीज, अगर ई टर्म होगा तो फिर आपका अल्फा का वैल्यू हो जाएंगे 2, अगर A2 टर्म होगा, A1 नहीं होगा क्योंकि A1 जो टर्म होता है उसका एक्साइटेड स्टेट नहीं होते हैं, तो A1 पॉसिबल नहीं है, लेकिन A2 टर्म अगर होगा अल्फा का वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 4, ठीक है। एंड यहाँ पे जो लैम्डा है दैट इज अ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट, दिस वैल्यू विल बी गिवन टू यू, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। द ई वैल्यू होगा, ई होगा टर्म तो उसका वैल्यू हो जाएंगे अल्फा का वैल्यू 2, और A2 होगा तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 4। तो ये चीज हम बहुत ध्यान में रखेंगे। नाउ लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स सो दैट स्टूडेंट्स को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने वाले हैं इज दिस वन। तो यहाँ पे दे हैव गिवन यू द वैल्यू ऑफ दिस। तो निकल 2 मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है दैट निकल 2 में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग डेफिनेटली होता है। सो दिस इज योर निकल 2 प्लस definitely in the octahedral field having electronic configuration D8, ठीक है। तो this I have already done with you, and this is having the ground state A2 T2 T1 ground state, just I have given done with you, so I'm not going to repeat it once again. So this is your ground state term है ना, so this is your ground state term. Just now I have also discussed with you अगर ground state term A2 होता है तो अल्फा का वैल्यू, just now I have discussed with you, अल्फा का वैल्यू हो जाएंगे आपका 2, ठीक है। Now as per the formula, what is our formula? One more minute. So as per formula, let us solve this. So you are having D8. So 1, 2, 3, 4. So n having the value 2. तो mu spin only value जो है इसका value as per the formula √n into n plus 2. Now you having the n value 2. You have 2 into दिस इज इक्वल टू √8। तो मैंने ये आप लोगों को ऑलरेडी बताया है अगर √8 आप मैन्युअली कैसे कैलकुलेट करोगे, नियर अबाउट जो फुल स्क्वायर होता है, जैसे √9 का वैल्यू होता है 3, सो √8 इससे थोड़ा कम है, 0.2 to 0.1 डिक्रीमेंट होता है, तो इसका वैल्यू 0.2, 2.8 या 2.9 ऐसा होता है। √10 का वैल्यू क्या होगा, 2.2 to 0.1 इंक्रीज होगा, तो √10 का वैल्यू आप देखेंगे ये 3.2 ऐसा कुछ होता है,
तो आपको कैल्सी यूज करने की जरूरत नहीं है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सिंस √9 इज 3, √8 इज 0.2 लेस, सो इसका वैल्यू नियरली हो जाएंगे 2.8. नाउ एज पर फॉर्मूला mu effective we have already seen. As per formula you have mu spin into 1 minus alpha lambda into delta 0. यहाँ पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देना है. Before that let us solve it. You see already I have informed you that the alpha value is 2 because the term ground state term क्या है A2 है. A2 होगा तो अल्फा का वैल्यू हम यूज करेंगे 4. आई एम सॉरी, अल्फा वैल्यू 2 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू. सॉरी, ई होगा तो अल्फा वैल्यू 2 हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे द वैल्यू दे हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड अस. उन्होंने डेल्टा 0 का वैल्यू दिया है. ठीक है, दे हैव गिवन अस द वैल्यू डेल्टा 0 एंड दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ लैम्डा. सारे वैल्यूज तो आपको दिया ही है. यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है दैट डेल्टा 0 का यूनिट भी सेंटीमीटर इनवर्स है एंड लैम्डा का यूनिट भी सेंटीमीटर यूनिट इनवर्स है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीज आपको ध्यान में रखना है. सो द वैल्यूज आर गिवन टू यू. व्हाई इज इट सो? सी, हमें दिया है दैट वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द वैल्यू. ना अल्फा का वैल्यू इज यूनिटलेस. ठीक है, नाउ यू हैव lambda by 0. So ये जो टर्म है you have to subtract from 1 which is unitless. तो ये टोटल unitless होना कंपल्सरी है. This value has to be unitless. ठीक है, and we always know that the delta 0 value is always given in centimeter inverse. So अगर unitless होना है तो lambda का वैल्यू भी सेंटीमीटर इनवर्स में ही दिए जाएंगे. नहीं है तो you have to convert it into centimeter inverse. I hope this is clear to all of you. Now यहाँ पे mu s का value we have already calculated is 2.8 and 1 minus, since it is A2 so alpha value is 4. Okay, lambda value that is given to you and that is minus 315 centimeter inverse and delta 0 value is also given to you, that is 11500 centimeter inverse. So if you calculate this, the answer is going to be 3.14 Bohr magneton. ठीक है, so now this value is in fair agreement with the observed value. So this is the answer. ठीक है, this is very important. Certain important informations I have given to you. Do keep it in your mind. Always remember that lambda and delta 0 का वैल्यू हमेशा क्या होगा, हमेशा सेंटीमीटर इनवर्स में ही होगा. अगर नहीं है तो आपको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व. यही क्वेश्चन आपको CSIR-NET में आए थे. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस इज CSIR-NET June 2017. They have given copper 2+ complex having a distorted which is shows an absorption band is 625. So this is the value of the wavelength. absorption band wavelength का वैल्यू दिया है. spin orbit coupling जो है, spin orbit coupling they have given the value of this. So spin orbit coupling constant मतलब lambda का वैल्यू they have given you. ठीक है, तो फिर let us solve this. Now you have the copper 2+. Now let's solve this. Okay, so you have the copper 2+ which is having the term 2D. ठीक है, नाउ आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू अगर 2D होता है, दिस इज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू, अगर D होगा तो अगर ये D स्टेट होगा देन अल्फा वैल्यू वी हैव टू कंसीडर एज 2. ठीक है, नाउ दिस इज हैविंग द 2D फॉर्म एंड देयरफॉर एज पर 2D फॉर्म तो इसका वैल्यू हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 2. I hope you know how to calculate the term symbols and I'm not elaborating over here. If you want me to mention me in the comment box and comment section, I'll definitely make a video on this. This is very easy. So you have this copper 2+, this is having the term 2D. 2D होगा तो अल्फा का वैल्यू आपका हो जाएंगे 2. ठीक है, now since यहाँ पे आपका copper 2+ is D9 system,
ठीक है, इन द ऑक्टाहेड्रल फॉर्म अगर है तो फिर दे हैव ऑलरेडी गिवन दैट इन द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. सो दिट इज द D9 सिस्टम. इट मीन्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर म्यू स्पिन वैल्यू आपका हो जाएंगे रूट ओवर n इंटू n प्लस 2. पुटिंग n इज इक्वल टू 1 you have root over 3 and the value of root over 3 is known to you, that is 1.732. now यहाँ पे जो important है वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि absorption band जो है, keep it in your mind, this is so very important. Absorption band value of lambda, let me say lambda dash because lambda have taken the spin orbit coupling को भी हम lambda बोल रहे, तो let is the wavelength be lambda dash. So this is 625 nanometer. This is the given data, very important. So this one is your given data. This is 625 nanometer, which is equal to 625 into 10 to the power minus 7 meter centimeter, 10 minus 7 centimeter. So therefore आपको मैंने क्या कहा, अगर सब वैल्यू दिया है, so you must be knowing that delta value this is equal to 1 by lambda dash, which is equal to 1 by 625 into 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएंगे. मतलब अगर लैम्डा का यूनिट है आपका सेंटीमीटर, देयरफॉर डेल्टा का यूनिट क्या हो जाएंगे, विच इज 1 बाय लैम्डा विच इज 1 बाय सेंटीमीटर. डेल्टा का यूनिट हो जाएंगे आपका सेंटीमीटर इनवर्स. क्लियर? सो सारे वैल्यूज तो आपको मिल ही गया है, बट नाउ अभी क्या करना है, यू हैव टू पुट इट इन द फॉर्मूला, बस सो इजी. सो नाउ यही आपका यूनिट कैलकुलेशन, ये सिस्टम ही थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो. सो म्यू इफेक्टिव का जो आपको फॉर्मूला है, दिस इज योर म्यू स्पिन इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा 0. सो सारे वैल्यूज हम बैठा देते हैं. दिस इज 1.732 इंटू 1 माइनस लैम्डा का वैल्यू आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, inform you the lambda value is 2. Then you have the delta 0 value which is 1 by then you have the delta 0 value which is the value of delta 0 is this. So therefore the delta 0 value is 1 by 625 into 10 to the power minus 7 into, now you have the value of spin orbit coupling that they have given you, 625 minus. So मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सारे डेटा जो है वो मैंने बिठा दिया है. तो then you have to solve this. Now just put all the values. Let me write it in a very clear form. तो ये जो डिनोमिनेटर में है इसे मैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस, इट विल कम अप 625 डिवाइड बाय 10 to the power 7. ठीक है, ये अगर यहाँ पे जाते 10 to the power 7 इंटू 625. तो जस्ट इसे सॉल्व करो. I have already solved it. The answer is 1.864 is the answer. Okay, so the answer over here is near about this. Answer is 2. Clear? This is very important, students. Do practice it more than once so that you can understand it. If you have any problem, do inform me about this. Now let's just move on to the next question, that is this. So यहाँ पे हमने जो लिया है, यहाँ पे हमने लिया है एक tetrahedral complex. So you are having tetrahedral CO2 plus, just ये भी हमने discuss किया है. This is the tetrahedral and obviously this is the D7 system. D7 system में आपका ground state क्या हो जाएंगे, A2 T2 T1. You have the ground state A2 and then you have अगर A2 है then you must be knowing A2 के लिए हम अल्फा का वैल्यू क्या लेते हैं, 4 है ना. जाएंगे आपको E नीचे होगा and this will turn out to be your T2. So no subscript which will be used. So this is 1 2 3 4 5 6 7.
तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3. ओके, जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3, हमें पहले स्पिन ओनली वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए. सो दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 3 इंटू 3 प्लस 2. सो दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 5 which is equal to रूट ओवर 15. तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मैंने बहुत बार कहा है, नियरेस्ट वैल्यू है रूट ओवर 16 का वैल्यू होता है 4, तो रूट ओवर 15 एक कम हो जाता है तो 0.2 करके कम हो जाता है. ठीक है, 0.2 टू 0.1, 3.8 टू 3.9 होगा. दिस इज द वैल्यू इज 3.87 एग्जैक्टली. तो 3.8 टू 3.9 आपको कैलसी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. सो दिस इज द वैल्यू इज 3.8 या 3.9, 3.9 भी आप लिख सकते हो. 3.87 इज द एग्जैक्ट वैल्यू. बस आपको सब कुछ मिल गया है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द mu effective value as per the formula, which is equal to mu s into 1 minus alpha into spin orbit coupling divided by delta. यहाँ पे delta t होगा this, and they have informed the value of delta tetrahedral 3, 1 and this. देखो ये भी important है, सेंटीमीटर इनवर्स में दोनों दिया है, थोड़ा आप यूनिट में भी थोड़ा फोकस करना. तो हमें mu s का वैल्यू मिल गया है 3.87. Okay, and then you have the value of alpha, that is your 4. Lambda, they have given the value of lambda, that is minus 172, and delta t का जो value है यहाँ पे 3100. And if you solve this, the answer is going to be 4.73. This is in fair agreement with the observed value, and your observed value over here is 4.5 to 4.64 magneton. Okay, now let us move on to the next problem, and this is going to be the last problem of this video. And मैंने जितने भी type होता है, I have collected all of them and solving all of them for you. I hope it makes beneficial to you. Now this is the next example they have given you. The complex like this. First of all, इसमें जो करना है हमें वो है इसका oxidation state. So we know that NO2 is having oxidation state of -1. तो ये total हो जाएंगे -6, और यहाँ पे this is 1 into you having 2 and lead is having +2. Overall this is +4, right? And इसका बाहर हो जाएंगे -4. तो as a result of which cobalt will be in +2 oxidation state. तो यहाँ पे you can see that the solution में हम जो information लिखेंगे, so cobalt 2 जो है, this is very interesting. This is in D7 and this is in octahedral field. Along with that, we have seen that the ligand in this case is a strong field ligand, right? Strong field ligand, and this will result in the low spin. ठीक है? So this you have the octahedral, okay, and now you have the low spin. So this is your T2G and this is your EG. You have the low spin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so you have the D7, so you are having number of unpaired electron is equal to 1. So since it is low spin octahedral and this is having your ground term EG. अच्छा, ये कैसा है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया. जब ये लो स्पिन हो जाता है, इसका टर्म सिंबल कैलकुलेट करने में स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन होता है. कुछ नहीं है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये मैंने लास्ट, तो यहाँ पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दिस अनपेड इलेक्ट्रॉन इज हैविंग two arrangement, two possibilities. It can either occupy this orbital, or that you are having two dx square minus y square orbital and dz square orbital at the EG level. So it can either occupy any one of them. So it is having two arrangement. ठीक है? So the probability is of this unpaired electron is 2. From the probability it is coming out to be E. So इसका terms इसलिए हो गया आपका E. So यहाँ पे number of unpaired electron is equal to 1. Therefore spin multiplicity क्या हो जाएंगे, 2s plus 1 is going to be, इसका n by 2 हो जाएंगे, इसका वैल्यू हो जाएंगे 2, तो इसका टर्म सिंबल हो जाएंगे 2Eg. आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्योंकि स्टूडेंट को जब लो स्पिन हो जाता है उसका टर्म करने में, सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होता है. इट इज वेरी इजी बिकॉज दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज having the tendency either
to occupy this or this, any one of the two degenerate orbitals. ठीक है, it is having two possibilities, two probabilities. Since 2 है तो इसका नाम हो जाता है E. E means 2, है ना? तो I hope this is clear to you. This is very important. ठीक है, now you see यहाँ पे आपको मिल गया है. Now very easily आप calculate करो. You have the mu spin value, spin only value, root over 1 into 1 plus 2. This is equal to root over 3. This is equal to 1.732. Now as per the formula, you have the mu effective, which is equal to mu s into 1 minus alpha into lambda by delta. यहाँ पे डेल्टा 0 होगा एंड ऑल दिस वैल्यूज दे हैव गिवन यू. ठीक है, एंड ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड एंड ऑलवेज ये ऑब्जर्व करना है आपको. यूनिट क्या, बोथ ऑफ देम आर सेंटीमीटर इनवर्स, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है. सिंस इट इज ई के लिए आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू, अल्फा का वैल्यू हो जाता है 2 है, जैसे ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू. तो लेट्स प्लेस ऑल द वैल्यूज. 1.732, ठीक है, देन यू हैव द वैल्यू ऑफ 1 माइनस अल्फा का वैल्यू 2 हो गया, लैम्डा का वैल्यू दे हैव गिवन यू दैट इज माइनस 515, डेल्टा 0 वैल्यू ऑल्सो दे हैव गिवन यू दैट इज 12000. ठीक है, व्हेन यू सॉल्व इट द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1.87. So this is the answer. So this is very important video, so please share our video to more and more students, because we want to prove our work to lots of the students, to the world. And thank you for watching our video. Thank you.